Assalamu alaikum students. Today we will start the topic that is known as interpolation with equally spaced data. As you can see here, there are three formulas that we will follow. The first one is Newton's forward interpolation formula. This one, and the second is Newton backward interpolation formula, and the third is Stirling's interpolation formula. Okay, so first of all we will see here what is Newton's forward interpolation formula. So consider the data we have, the points x0, y0, x1, y1, x2, y2, xn, yn, and we will see first of all how data is equally spaced data. Okay, so how can we check such that x1 minus x0, this is equal to x2 minus x1, and this is equal to x3 minus x2, and so on up to xi minus 1 and up to xn minus 1. This is equal to h. Here h is a constant and it may be पॉजिटिव और नेगेटिव. इस तरह से जब हम x की वैल्यू को, जो कंसेक्टिव वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज का जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे और चेक करेंगे कि इन तमाम वैल्यूज का जो वैल्यू होगी, कॉमन वैल्यू, वो सेम हमारे पास आएगी. So in this way we can see that the data is equally spaced data. So next is forward difference table. The forward difference table for the data points, the points are x0, y0, x1, y1, and so on up to here we are taking 5 points. तो इन पांचों पॉइंट को हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंप्लीट द टेबल. ठीक है, किस तरह से टेबल बनाएंगे, हम इन वैल्यूज को टेबल में पुट करेंगे, फाइंड करेंगे वैल्यूज को. सबसे पहले हम x की वैल्यूज को लिखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यूज को तमाम को लिख देंगे. व्हाट इज वैल्यूज ऑफ x, x0, x1, x2, x3, okay, x4 and x5. the first column is the values of x के तमाम वैल्यूज को हम यहाँ पे लिखेंगे. नेक्स्ट हम लिखेंगे y, put all the values of y. तो y की क्या वैल्यूज है हमारे पास, y0, y1, y2, y3, y4 and up to y5. y5 तक हम तमाम वैल्यूज को लिखेंगे. तो किस तरह से अब हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को कंप्लीट करेंगे. फर्स्ट वन इज डेल्टा वाई. डेल्टा वाई हम किस तरह से फाइंड करेंगे, वी विल राइट इन द मिडल वाई नॉट और वाई वन के मिडल में हम लिखेंगे द फर्स्ट वैल्यू दैट इज इक्वल टू वाई वन माइनस वाई नॉट. वाई वन, दिस वाई वन minus y naught, this y naught. We will say this is equal to delta y naught, and we will write this value delta y naught in the middle of y naught and y1. Okay, second is similarly we will write delta y1, and this will be equal to y2 minus y1. Here this is equal to y2 minus y1, this y2 minus y1, this is delta y1. And similarly we can find delta y2, that will be equal to y3 minus y2, delta y3 y4 minus y3, delta y4 that will be equal to y5 minus y4. Now we will find the next value, that is delta square y. This delta square y, the same as it is as we have find the values of delta y, we same method हम apply करेंगे. Now the values are, how many values, check it, delta y naught, delta y1, delta y2, delta y3 and delta y4. नेक्स्ट अब हम क्या फाइंड करेंगे, डेल्टा स्केयर y. तो फर्स्ट वैल्यू कैसे आएगी, देखें, डेल्टा स्केयर y नॉट इज इक्वल टू
डेल्टा y1, दिस डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y0, ये जो डेल्टा y0 इनको माइनस करेंगे, डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y0 करेंगे, सो वी हैव डेल्टा स्केयर y0 and we will write this value in the middle of delta y0 and delta y1. Similarly we can find delta square y1, वो कैसे आएगा, delta y2 minus delta y1, and so on we can find delta square y2 and delta square y3. Clear? So we have x, y, delta y and delta square y. Next is delta cube y. Now the points are, अब हमारे पास यहाँ पे जो points रह जाते हैं, the values we have, अब कौन कौन सी values हैं, we have delta square y0, delta square y1, delta square y2 and delta square y3. Okay, by using these values, now we next find the value of delta cube y. वो कैसे आएंगे, the same method. The first value we will denote with delta cube y0, और वो किस तरह से आएंगी, delta square y1, this value minus delta square y0. Okay, similarly delta cube y1, delta cube y2. Now again, how many values we have? Right now we have three values, 1, 2 and 3. Next we will find delta raised to power 4y, the same method. So delta raised to power 4y0 is equal to delta cube y1 minus delta cube y0. Subtraction करके हमारे पास आ जाएगा delta raised to power 4y0, and similarly delta raised to power 4y1 is equal to this is a subtraction of delta cube y2 minus delta cube y1. अब हमारे पास यहाँ पे कितनी वैल्यूज हैं, how many values we have? Now right now we have two values, 1 and 2. तो लास्ट में हमारे पास एक ही वैल्यू आएगी डेल्टा क्यूब y की, वो किस तरह से आएगी, डेल्टा रेज़ टू पावर 4y1 माइनस डेल्टा रेज़ टू पावर 4y0 इज इक्वल टू डेल्टा रेज़ टू पावर 5y0. Okay, so in this way you can see how can we draw the forward difference table. Okay, this is very easy. X की values थी हमारे पास, Y की values थी, then we will next we find delta y1, then delta y, then delta y, delta square y, delta cube y, delta 4y and delta 5y. So you please note down this table. Okay, after this we will use this table, the values of this table in forward interpolation formula. Okay, and what is forward interpolation formula? This is equal to, as you can see, the formula is y f of x is equal to y naught plus p delta y naught plus p delta y naught plus p into p minus 1 over 2 factorial delta square y naught plus p into p minus 1 p minus 2 divided by 3 factorial delta cube y naught, and so on we can write it here. Then we can extend this formula. And what is p? Note down, p is x minus x naught divided by age, and we know what is x naught. The first value जो थी हमारे पास वो x naught थी. What is age? जो difference था, common difference between the consecutive values of x, उनमें जो difference था वो हमारे पास age था. और x कोई भी value हो सकती है, that is variable. For example, x कोई भी value दे के हमें ये कहा जाए find the value of the function at this point, तो x को हम वो put कर देंगे. x2 भी हो सकता है, positive भी हो सकता है, negative भी हो सकते हैं. So please note down this formula, forward interpolation formula. Okay, और इसमें हम y0, delta y0, delta square y0, delta cube y0 इस तरह से हम values को लेते हैं, and you can say कि values हम यहाँ से हम लेंगे these values, as you can see here.
uh, we will take these values in this formula, this one. Okay, sorry, I need to add more. We also need y naught. So in forward interpolation formula, we use these values. You can see y naught, delta y naught, delta scale y naught, delta q y naught, and you can see it is y naught, delta y naught, delta scale y naught, delta q y naught, and delta raised to power 4 y naught, and delta raised to power 5 y naught. We can extend this formula. Okay, and keep it in mind, p क्या था यहाँ पे हमारे पास, वो था x minus x naught divided by h. Okay, what is next? Next is the question to solve by using forward interpolation formula. And the question is, as you can see on your screen, please see the statement of the question. The statement of question is, find the cubic polynomial, from the following data. Also find the value of function at value 0.4. Okay, it means this x is here, x is equal to, we need to find the value of the function at 0.4. Okay, by using forward interpolation formula. इस formula को हम use करेंगे and we will find the cubic polynomial, and also we need to find the value of function at point x is equal to 0.4. So first of all, you can see the values is given. This is x, this is x naught. In fact, this is x naught, x1, x2, x3, and what is this? Y naught, y1, y2, and y3. Okay, the same. Now we need to complete the table. X के values लिखेंगे. First of all the values of x 0, 1, 2, 3. Next y की values को लिख लेंगे हम 1, 2, 1, 10. Okay. What is this? This is equal to delta y naught. और ये किस तरह से आएगा? 2 minus 1. We will write in the middle of 1 and 2. 2 minus 1 करेंगे तो आएगा 1. Next देखें, 1 minus 2 is minus 1. 10 minus 1 is equal to 9. Clear? So what is next? We need to find delta square y, and this is equal to minus 1 is equal to minus 2, and this is equal to, we know this is equal to delta y, delta square y naught. Okay, similarly, how can we find 10? 9 minus into minus plus 1 करेंगे तो 10 आ जाएगा. Clear? And the last one is delta cube y, and this is equal to, we know this is equal to delta cube y naught. This is equal to delta cube y naught. Clear? So in this way we can easily draw the table and complete the table of forward difference table. This is very easy. Next we need to find the polynomial, cubic polynomial, and we need to find the value of function at point x is equal to 0.4. Okay, please note down this. After this table, now what is next? Here we can see that the value of x naught. What is the value of x naught? यहाँ पे x naught की value क्या है? See, this is x naught. This is equal to x naught.
We know this is equal to x naught, so x naught is equal to 0. Okay, and this is, what is this? This is y naught. Y naught, so y naught is equal to 1. And what is h? We can easily see 1 minus 0 is 1, or 2 minus 1 is 1, 3 minus 2 is equal to 1. So data is equally spaced. So the value of h is equal to 1. Okay, and the formula of p is equal to x minus x naught divided by h. So x as it is, x naught is 0. Okay, and h is equal to 1. So p is equal to x. Please note here p is equal to x. Now we use the formula, and the formula for Newton's forward difference forward formula is f of x is equal to y naught plus p into delta y naught plus p minus 1 p into p minus 1 divided by 2 factorial delta square y naught plus p into p minus 1 p minus 2 divided by 3 factorial delta cube y naught. And we can easily see what is the value of delta y naught in the table. This is equal to 1. Okay, what is the value of delta square y naught? This is equal to minus 2. What is the value of delta cube y naught? This is equal to 12. So put all the values in this formula. Putting the values, अब y naught क्या है? 1 होगा. Okay, what is p? P is equal to x. Here p is equal to x आ जाएगा. So put the value of p. P is equal to x. Delta y naught is equal to 1 plus x into x minus 1 divided by 2. Delta square y naught is equal to minus 2 and plus x into x minus 1 into x minus 2 divided by 3 factorial delta cube y naught is equal to 12. Okay, now simplify it just. इसको simplify करें आप and see what will comes. When you will simplify it, you can easily see this is equal to f of x. Please simplify this by yourself. It will comes f of x is equal to 2x cube minus 7x squared plus 6x plus 1. So this is the cubic polynomial that was asked in the question to find the cubic polynomial. So by using this formula, we can easily find the cubic polynomial. We need to find another thing. एक और क्वेश्चन भी था कि हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी थी 0.4 पे. अब हम क्या करेंगे? We just put x is equal to 0.4 and simplify it, and you will see the answer will comes to 0.408. क्या करें? जहां जहां पे x है वहां पे 0.4 पुट कर दें. ओके, इस फंक्शन के अंदर, क्योंकि फंक्शन की हमने वैल्यू फाइंड करनी है. आप देख सकते हैं in the question there was no function, only points was given. फंक्शन कोई नहीं था हमारे पास. हमने क्या किया? फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल यूज किया, टेबल ड्रॉ किया, ठीक है, और फार्मूला यूज किया न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉरवर्ड फार्मूला हमने यूज किया. न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला जो था इंटरपोलेशन का वो हमने यूज किया, और फंक्शन फाइंड आउट किया यहाँ से हमने क्यूबिक, और इसी फंक्शन में फिर हमने 0.4 पे वैल्यू को फाइंड आउट किया. जी, clear students? Next we have another question, and the question is, we have another question related to Newton's forward interpolation formula and forward table. Question is, from the table estimate, from this table we need to estimate number of students who obtain marks between 40 and 45. Okay, you can see in this question marks are given,
and number of students are given. For example, marks from 30 to 40, okay, or you can say below to 40, number of students is 31. From 40 to below 50 we have 42. From 50 to 60, 51, and so on. But we don't know how many students between 40 to 45. We don't know. Okay, we just know that up to 50, if you will take here the number of students, or below the 50 we know how many students, but we don't know how many students between 40 to 45. Now we will find it by using Newton's फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला. तो क्या करेंगे, सबसे पहले वी नीड टू ड्रॉ अ टेबल. ठीक है, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें, मार्क्स नोट करें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को नोट करें. Okay, now we will complete a table by the given values. जो भी values given है हम उससे एक टेबल ड्रॉ करेंगे. और टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे, दिस इज वेरी इजी. नाउ वी नो अबाउट दिस. रीअरेंजिंग द टेबल. अब कैसे रीअरेंज करेंगे, मार्क्स बिलो एक्स, हम यहाँ पे एक्स ले लेते हैं. व्हाट इज एक्स, दीज मार्क्स. फॉर एग्जांपल the marks below 40 is 31. Okay, we are writing here 40. The marks below 50 is 31, marks below 40 is 31, and marks below 50 is, how can we find this 73? This is equal to 31 plus 42. Okay, it's mean that marks below the 50, how many students? So how can we find the previous student plus the students from 40 to below the 50? उन दोनों को ऐड करेंगे. This 73 is in fact is equal to 31 plus 42. Okay. Similarly हम देखेंगे marks below 60, वो किस तरह से आएंगे. This is 73 plus 51. 73 में 51 प्लस करें तो 124 आ जाएगा. And similarly the marks below 70, because these values are continuous, 30 to 40 है, 40 to 50 है, 50 to 60 है, 60 to 70, 70 to 80. तो हम किस एक इंटरवल में हम इसकी वैल्यूज को काउंट कर रहे हैं. 32 बिलो 40 यू कैन से 39, और फिर यहाँ से 40 to 49, देन 50 to 59. क्लियर, इस तरह से हम वैल्यूज के ले रहे हैं. एंड सिमिलरली बिलो एक्स किस तरह से आएगा, 124 प्लस 35, दिस 35 ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इस तरह से हमारे पास आ जाए. एंड मार्क्स बिलो 80, we need to add 31 in 159, so it is equal to 180. The next things are very easy now. ठीक है, x की वैल्यूज आ गई, y की वैल्यूज आ गई. we know how to find delta y. How to find this delta y now? This delta y is 73 minus 31. This is equal to delta y naught. Similarly, to find delta y1, it is equal to 124 minus 73 is 51. 159 minus 124 is 35. 180 minus 159 is 31. And similarly, you can complete this table. 9 minus 16 minus 4 minus 25, 12, and 37. Okay, and keep it in mind what we need to find. Number of students between 40 and 45 we need to find. But before this we need some function. हमें एक function चाहिए, ठीक है, and we will find that function by using Newton's
forward interpolation formula. Now we will put these values in the formula. And what is the formula? You can see the formula is this one: f of x is equal to y naught plus p into delta y naught, and so on. This is the formula. Okay. And what is p? P is equal to x minus x naught divided by h. Now here we can see that the values. What is the value of x naught? X naught is 40, as you can see here. Okay. And what is h? We can easily find 50 minus 40 is equal to 10. So 10 is the common difference. Now what we need to find, and here we are also taking x is equal to 45. Okay, we can also find the function by in the form of x, or we can find the value directly by putting x is equal to 45. क्लियर? x is equal to, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में क्या किया था, हमने एट द एंड पुट किया था इन वैल्यूज को. आई कैन शो यू. लास्ट एग्जांपल में जो हमने किया था उसमें एंड पे जाके वैल्यूज पुट की थी x is equal to 0.4. but we can also do directly with finding the polynomial. जो हम फाइंड कर रहे हैं उसके साथ भी हम कर सकते हैं कि यहीं पे हम x की वैल्यू भी पुट कर दें 45. ओके, x को 45 पुट करेंगे. नाउ तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम. p क्या आ जाएगा, देखें p. नाउ दिस p इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट करेंगे. दिस p इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है 45 माइनस x नॉट की वैल्यू 40 है, h की वैल्यू 10 है. सो दिस इज इक्वल टू 0.5. अब ये तमाम वैल्यूज हम पुट कर देते हैं फंक्शन में. ओके, व्हाट इज y नॉट? y नॉट इज इक्वल टू, वी कैन सी y नॉट इज इक्वल टू 31. ठीक है. व्हाट इज डेल्टा y नॉट and what is p? P is now 0.5. p you can see first is y naught, then p is 0.5. delta y naught क्या है हमारे पास, चेक करें, 42 है. so this is delta y naught. next is p. what is p? 0.5 into 0.5 minus 1 divided by 2 factorial. delta square y naught, what is delta square y naught? that is equal to 9. okay, तो 9 पुट करेंगे and similarly we can put all the values और इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे. okay, when we will simplify it, you can see after simplification हमारे पास जो वैल्यू आएगी, functions value at 45, that will be equal to 47.867, and this is approximately 48. this is one value of function at 45. okay, but we need to find, हमें क्या find करना था, we need to find number of students having marks between 40 to 45, 40 and 45. वो हमें find out करना था. वो किस तरह से आएंगे? number of students having marks less than 45, okay, and number of students having marks less than 40. so less than 45 we just calculated, वो कितने हैं, 48 है. and less than 40 क्या है, we can see in the table, we can see it in the table कि 40 से कम जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स कितने हैं, डेट इज इक्वल टू, यू कैन सी इन द टेबल, वो हमारे पास कितने हैं, 31 है. ओके, डेट इज इक्वल टू 31. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 48 माइनस 48 में से माइनस कर देंगे 31, दिस 31. तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा, डेट इज इक्वल टू 7. So the number of students having marks between 40 and 45, how many students now? There are 7 students. So this, by using this interpolation, that is Newton's forward interpolation, and using this table, we can find the estimated number of students between 40 and 45. देखिए इसमें हमारे पास ये नहीं था गिवन के 40 to 45 कितने हैं, जस्ट मार्क्स गिवन थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन थे. क्या किया हमने, टेबल ड्रॉ किया, फॉरवर्ड टेबल हमने ड्रॉ किया इसका,
एंड देन वी यूज न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला जो था उसको यूज किया, ठीक है। वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफाई किया इसको और फंक्शन की वैल्यू निकाली 45 पे। एंड देन फिर हमने क्या किया, जो 40 टू 45 में जो स्टूडेंट्स थे लेस देन 45 लिए और लेस देन 40 करके उनको हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास आ गए 7। क्लियर? So this is the topic of Newton's forward interpolation.